Hello friends, how are you? In this lecture of applications of inductive effect, today we will see why aliphatic amines are stronger bases than aromatic amines. We know that basic strength is directly proportional to pKa, and it is also directly proportional to positive inductive effect. It means that as pKa increases, basic strength definitely increases. अगर pKa बढ़ता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. We know that what is pKa? pKa क्या होता है? pKa is equal to negative logarithm of Ka to the base 10. A dissociation, what is Ka? Dissociation constant for acid. Like pH. जब pH बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. जब pH घटता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है. एग्जैक्टली सेम. So basic strength is directly proportional to pKa. It is also proportional to positive inductive effect. यानी बेसिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ विद नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा. यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट and inversely proportional to negative inductive effect. In today's comparison, I have taken cyclohexylamine and aniline. What is structure of cyclohexylamine? ये एलिफेटिक अमाइन है. Name of this amine is cyclohexylamine. This is aliphatic. I will compare this cyclohexylamine with aromatic amine, that is aniline. Remember, both these are Lewis bases. You know what is the Lewis base? Lewis base होता क्या है? Lewis base यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज. So for that, electron density is required. In case of cyclohexylamine, on this nitrogen there is one lone pair of electron. Exactly same in case of aniline. Here also one lone pair of electron is present on nitrogen. And both nitrogen atom can donate pair of electrons. But which nitrogen atom can donate pair of electron very easily and very fastly? जब कोई नाइट्रोजन और जब कोई एटम लोन पेयर इजीली डोनेट करता है, फास्टली डोनेट करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है. यानी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एटम वो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करेगा. अगर मैंने इसका प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिलामाइन, इसका प्रोटोनेशन, और एनिलिन का भी प्रोटोनेशन मैंने किया, H+ Na प्रोटॉन. So which nitrogen atom can donate pair of electrons very easily to this proton? Whether nitrogen from cyclohexylamine can donate pair of electron easily, or nitrogen from aniline can donate pair of electron easily to this proton. So it depends on availability of electron density. Just we have seen basic strength is directly proportional to pKa. If we don't know what are the values of pKa, then it is not possible to decide. So for that we must know inductive effect, positive inductive effect, negative inductive effect, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, ये हमें पता होना चाहिए. फिर भी
pKa of cyclohexylamine is a 10.64 and pKa of aniline is 4.6. And we know that basic strength is directly proportional to pKa. So pKa value of cyclohexylamine is ज्यादा है compared to what? Aniline. And definitely cyclohexylamine is stronger base than aniline. अगर हमें pKa values पता नहीं है, we don't know pKa values of cyclohexylamine, it is not possible to remember all pKa, pKb values because there are so many infinite number of compounds are there. How to remember? See here. First I will take cyclohexylamine. Now, in cyclohexylamine, this NH2 is attached to this carbon. And on this carbon, there is one hydrogen atom is there. So this carbon is tetravalent. This carbon-carbon single bond and a sigma bond हुआ. This carbon-carbon single bond and AB sigma bond हुआ. Carbon-hydrogen single bond and AB sigma bond हुआ. A carbon-nitrogen single bond and AB sigma bond हुआ. And we know that carbon having 4 sigma bonds यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3. नाउ कम टू दिस aniline. We have to consider this carbon atom. To this carbon atom, this carbon-carbon single bond and a sigma bond है, ये carbon-nitrogen single bond and a sigma bond है. The meaning of double bond and 1 sigma and 1 pi. And to this carbon 3 sigma and 1 pi, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. In hybridization part we have seen this. When 4 sigma bonds to carbon and hybridization is sp3, 3 sigma and 1 pi and sp2. अगर 2 sigma और 2 pi यानी sp. And we know that, हमें पता है percentage of s character in sp3 is a 25%, in sp2 is a 33.33%, and in sp यानी 50%. Percentage of s character. How to calculate percentage of s character? Percentage of s character is equal to total number of s atomic orbitals divided by total number of s, p, if any, d, etc. like this into 100. sp3, sp2, sp, d और f नहीं है. So percentage of s character in sp3 is equal to, sp3 में s atomic orbitals कितने? 1. So 1 divided by total number of atomic orbitals 1s and 3p and 4 into 100 यानी 25%. So यहाँ पे ये this is sp3 hybridized carbon atom, यानी यहाँ पे 25% s कैरेक्टर है, जो कि ये कार्बन sp2 hybridized. So percentage of s character 33.33%. And we know that electronegativity is directly proportional to percentage of s character. Electronegativity is directly proportional to percentage of s character. यानी ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. This carbon is what? Electronegative. तो ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, यानी शिफ्टिंग ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दिस कार्बन. सो दिस इज अ माइनस आई इफेक्ट. सो दिस कार्बन इज एक्सर्टिंग माइनस आई इफेक्ट, यानी दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन इजीली. इसका रेजोनेंस होगा. ये रेजोनेंस क्या है? व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? विल सी नेक्स्ट लेक्चर. यानी दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इजीली फॉर प्रोटोनेशन, यानी यहां पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है. सो दिस नाइट्रोजन कैन नॉट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली.
But in case of cyclohexylamine, यहाँ पे this carbon is sp3 hybridized. And remember, when sp3 hybridized carbon is there, so that sp3 hybridized carbon will exert positive inductive effect. ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड टू नाइट्रोजन बढ़ेगी. सो दिस नाइट्रोजन कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है. बिकॉज दिस कार्बन इज व्हाट, sp3 hybridized. This carbon is exerting positive inductive effect, yani electron density will increase around to this nitrogen, so this nitrogen can donate pair of electrons very easily and very fastly. यानी A प्रोटोनेशन फास्ट है और A प्रोटोनेशन स्लो है. और जबकि स्लो प्रोटोनेशन होता है तो वो वीक बेस होता है, जबकि फास्ट प्रोटोनेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज व्हाई cyclohexylamine is stronger base than what, aniline. Isn't it? If in doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will back to you. Thank you.